Hi friends, let's continue with CA Foundation May 2026 RTP. We'll continue with bank reconciliation statement. Prepare a bank reconciliation statement for Vibha Traders as on 31st March 2025. Vibha Traders का BRS बनाना है. Cash book of Vibha Traders showed a debit balance of 3,29,000. Debit balance of cash book means cash book का normal balance debit ही होता है. So Vibha Traders has a debit balance of 3,29,000. But it does not agree with the balances per passbook. So the balances are not matching, hence we are supposed to prepare a reconciliation statement. Now, I prepare reconciliation statement by preparing one small working note. I'll prepare one cash book and one passbook. एक side cash book बनेगी, एक side passbook बनेगी. Cash book में receipts, issue payment side, passbook में withdrawals और deposit side. Now, balance as per cash book. यहाँ पे जा रहा हूँ. ये जैसे मैंने बोला, वन साइड कैश बुक, वन साइड पासबुक, रिसीट, इशू पेमेंट्स, विड्रॉल, डिपॉजिट्स, balance as per cash book. Cash book's normal balance is debit. So here I will keep a minus sign, then opposite side, plus, minus, plus. To learn these signs, I have prepared one short video for 7 minutes, how to study BRS in just 7 minutes on my channel. Basically, what I am trying to do, whatever balance is given, cash book balance, debit balance of cash book. So cash book debit side, I start with minus sign. This is mechanical, but I start with the sign minus. Means whatever balance is given, I'll go there in that book on that side and put a minus sign. मैं जिसका भी balance दिया है उस बुक में जाऊंगा, उस साइड में जाऊंगा और माइनस साइन डालूंगा और ऑपोजिट साइन डालूंगा. तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस गया तो कैश बुक के डेबिट में क्या माइनस डाला एंड देन ऑपोजिट साइन. और अब दूसरा रूल क्या है, जिसने रिकॉर्ड किया है उसकी बुक में रिकॉर्ड करो. द पर्सन हु हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन प्लीज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन दैट बुक ओनली. On 12th March, payment side of cash book was undercast. Payment side of cash book was undercast. Means पेमेंट साइड हमने कम लिखा है, तो कौन सी साइड ज्यादा लिखा है, रिसीट साइड. तो कितना अमाउंट 12,000. सो लेट्स राइट 12,000 हियर. आई होप यू अंडरस्टूड. पेमेंट साइड वाज अंडरकास्ट, मतलब पेमेंट साइड कम लिखा, तो कौन सी साइड ज्यादा लिखा होगा, रिसीट साइड. तो जो हुआ है वो करो, जिधर लिखा है उधर रिकॉर्ड किया, तो हमने रिसीट साइड ज्यादा लिखा होगा. वी मस्ट हैव रिकॉर्डेड मोर ऑन द रिसीट साइड, सो वी हैव रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड. नेक्स्ट, transaction 1 is over. Second, a check of 85,000 issued was not taken in the bank column. Issued was not taken in the bank column. Means we issued a check, but we have not entered in the bank column. Means we have not entered in the cash book itself. Bank column मतलब हमारी cash book में bank column होती है. So we have issued a check, but we have not entered in the bank column. Means we have not entered in the cash book itself. But we have not recorded. So bank must have recorded. Bank means passbook. Passbook में कहाँ जाएगा? तो withdrawals में, because bank will debit my account. I hope it is clear. So was not taken in the bank column means we have not recorded, but the passbook must have recorded, and the passbook will remove money from our account because we have issued a check. Next, on 22nd March, debit balance of 18,500 on the previous day. Debit balance of the previous day was brought forward as credit balance. हमने debit balance को credit balance करके दिखाया. हम मतलब कौन, who are we? Cash book. So cash book debit side balance. This balance we have written here. So here we'll write 18,500 into 2. Why into 2? The reason is simple. Into 2, that is 37,000. Why like this? Because debit balance we have brought forward as credit balance. जो debit में लिखना था वो credit में लिखा. मतलब one effect of not writing on the debit side and second effect of writing it on the credit side. मतलब एक effect जो हमने debit में नहीं लिखा मतलब credit कर दिया, and one effect that हम उधर जाके लिख के आए तो डबल अमाउंट डिफरेंस. तो एक रूल है, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड रिजल्ट्स इन डबल अमाउंट डिफरेंस. वापस रिपीट करता हूँ, डेबिट बैलेंस रिटर्न एज क्रेडिट बैलेंस, मतलब डेबिट में लिखना था वो क्रेडिट में लिख दिया, तो डेबिट में नहीं लिखा इन शॉर्ट. तो नहीं लिखना मतलब एक क्रेडिट इफेक्ट दिया, ना लिखने का एक इफेक्ट, और एक इफेक्ट हम जाके लिख के आए, तो एक इफेक्ट जो नहीं लिखा उसका और एक जाके लिख के आए, तो 2 times डिफरेंस. नेक्स्ट, out of the total checks amounting to 42,000 issued in the last week of March. So we have issued checks of 40,000. V means cash book. Cash book में issue. Checks aggregating to 28,500 were encashed. So 42,000 के चेक इशू किए, उसमें से 28,500 के क्लियर हो गए. तो कितने क्लियर नहीं हुए? So who issues check? हम. 42,000. Out of that, how much checks cleared? Encashed means cleared. So how much amount of checks not cleared? 13,500. That will come in the bank reconciliation statement. I hope it is clear. So we issue check of 42,000. Out of the 28,500 checks are cleared. So how much are not clear? The balancing amount.
Next, dividend of 35,000 collected by bank. Who collected? Bank. Bank means passbook. Passbook में withdrawal के deposit deposited because bank collected. So bank will credit my account. And fire insurance premium 20,000 paid by bank, not recorded in the cash book. So 35 will come on the deposit side and 20,000 will come on the withdrawal side. So 35,000 here and 20,000 here because bank is recorded. Next transaction. Total 11 transactions. One check issued to a creditor of 1,20,000. We have issued a check of 1,25,000. Was recorded twice in the cash book. So मैंने एक चेक बना के दिया क्रेडिटर को पर हमने दो बार एंट्री कर ली. So it doesn't mean कि दो बार अमाउंट लिखना है. We have recorded twice, but the check has been issued only once. So who has issued check? We. We means cash book. Cash book में कहाँ लिखेंगे? तो के issue side में 1,29,000. By recording twice, it doesn't mean that we have given amount twice. Next, a check from a customer for 12,000 was deposited in the bank on 28 March. So a customer gave me a check of 12,000. I deposited in the bank but was dishonored. And the advice was received from the bank on 5th April. So a customer gave me a check. I deposited into bank but it was dishonored. And I came to know in the next month. So who dishonors the check? Who dishonored the check? Customer. He gave me and he dishonored. But who records the fact of dishonor? Dishonor की एक्टिविटी सबसे पहले कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक. बैंक मतलब पासबुक. पासबुक में विड्रॉवल के डिपॉजिट विड्रॉ बैंक अपने अकाउंट में से विड्रॉ कर लेगा. विड्रॉ इन द सेंस क्रेडिट नहीं हुआ मतलब डेबिट हो गया. तो विड्रॉवल में जाके लिखेंगे 12,000 ईयर. नेक्स्ट, the bank paid a credit card bill of 2,500 which was not recorded in the cash book. बैंक ने क्रेडिट कार्ड पे बिल पे किया जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया. तो ओके, बैंक ने तो रिकॉर्ड किया. बैंक मतलब पासबुक. पासबुक में विड्रॉवल में बैंक हमारे अकाउंट से विड्रॉ करेगा. दिस इज नथिंग बट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द बैंक. ऑटो पे होता है ना, हर महीने की तारीख पे डेबिट हो जाता है वैसा वाला. नेक्स्ट, the bank wrongly created a check of 25,000 of another customer in our account. कितनी अच्छी बात है ना, दूसरे कस्टमर का चेक हमारे अकाउंट में डाल दिया. लेकिन ये तो एरर हुआ है. किससे एरर हुआ है? बैंक से. बैंक मींस पासबुक. पासबुक में कहा जाएंगे? क्रेडिटेड मतलब डिपॉजिट में जाके 25,000. नेक्स्ट, now mark this important. Rupees 500 discount received was wrongly entered in the bank column in the cash book. So we received a discount of 500. Discount received और हमने कैश बुक की बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया. सबसे पहले when do we receive discount? When we make payment. हम किसी को पेमेंट करते तो हमको डिस्काउंट मिलता है. So basically what will be the entry? Creditors account debit to bank account to discount account. So हमने डिस्काउंट मिला है वो हमने क्या कर दिया है? रिकॉर्ड कर दिया है. बराबर है. तो डिस्काउंट कैसे मिलता है? तो कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव. मतलब हमने किसी को पेमेंट किया होगा तभी हमको डिस्काउंट मिला होगा. तो हम मतलब कौन? कैश बुक. कैश बुक में कहा जाएंगे? पेमेंट साइड में. नेक्स्ट, mark this also important. A debtor Mr. X deposited a check of 32,000 in the bank directly in the month of March. हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर दिया मार्च मंथ में विदाउट इंटीमेटिंग टू रानी ट्रेडर्स. रानी ट्रेडर्स कौन है? रानी ट्रेडर्स कोई नहीं है, विभा ट्रेडर्स है. मिस्टेक है यहाँ पे. Right, and the same check was dishonored by the bank due to insufficient funds in the month of March itself. हमारे कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया मार्च मंथ में और वो चेक बैंक ने डिसऑनर किया. कौन से मंथ में डिसऑनर किया? सेम मंथ में डिसऑनर किया क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे. नाउ कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया कितने का? 32,000 का. तो कस्टमर डिपॉजिट करता तो यहाँ पे, बट बैंक ने वही चेक को डिसऑनर कर दिया उसी मंथ में. So there will be no posting of this entry because same month deposit and same month dishonored. Reconciliation is prepared to reconcile the timing difference. Same month में set off हो गया तो नहीं record होगा. That's it. Let's check all amounts add less बराबर गए हैं कि नहीं गए. So add में 37,000 13,500 है कि नहीं चेक करते. Yes, we have
Then 35,000 1,29,000. We'll check here also. 35,000 1,29,000. Yes. Then 525,000. Yes. All additions there. And then deductions 12,000. Sorry. 12,000. 85,000. Let's check. 12 and 85. Yes. We have 12. We have 85. We have 20. We have 12. Yes. And 2,500 one more. Yes. So all add and all less consider and 30 to 32 gets cancelled. So this was bank reconciliation statement. Let's go to the next question, that is inventory. Now, very important question again. Let's start. Lavender Limited prepared their accounts financial year ended on 31st March. Fine. Due to unavoidable circumstances, actual stock was taken on 10th April. Matlab, this is physical stock verification which was done on 10th April. That is after the year ending. So whenever stock taking is done after the year ending, all sales will be added back at cost price. All sales will be added back at cost price to find out the real value of stock on 31st March. क्योंकि उन 9-10 दिनों में, सॉरी 10 दिनों में जो भी गुड्स बिके होंगे वो मेरे पास ही थे ऑन 31st March. तो all sales will be added at cost price and all purchases done in this 10 days will be deducted because these goods were not there with me on 31st March. इसको मैं सिंपल हिंदी में बोल देता हूँ. इन 10 दिनों में जो माल बेचा होगा वो मेरे पास ही था 31st March पे. तो सारे सेल्स एड बैक कर दूंगा एट कॉस्ट प्राइस. क्यों एड बैक कर दूंगा? क्योंकि मैंने 10 दिन बाद काउंटिंग किया और सारे परचेजेस जो मैंने किए इन 10 दिनों में वो मैं लेस कर दूंगा क्योंकि ये गुड्स मेरे पास 31st March पे नहीं थे. नाउ आई ऑलवेज गिव वन इंस्ट्रक्शन. दिस इज फिजिकल स्टॉक गिवन ऑन 10th April एंड वी आर ऑलवेज सपोज टू फाइंड आउट द बुक स्टॉक. जो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए बुक्स में, पर यहाँ पे ascertain the value of stock on 31st March they have mentioned. So they are not clear exactly what they want. Actually the sentence indicates that physical stock दिया है, book stock निकाल के दीजिए. But institute in this particular question has started from physical stock and completed at physical stock taking only. That's a pure interpretation part. So basically what I will suggest, physical stock is given, always we find out book stock. But since they have given physical stock and they are finding out physical stock only in the solution which has been provided, will solve accordingly. मतलब physical दिया है, physical के हिसाब से ही निकाल के दीजिए 31st March पे. I hope मैंने जो बोला है वो ध्यान से सुना है आपने. Normally physical stock is given and we are supposed to find out book stock. But your institute has interpreted the question in such a way that physical stock is given and they have found out physical stock only on 31st March. So no problem. Let's start reading. Now sales are entered in the sales book on the day of dispatch. मतलब मैं sales कब record करता हूँ? जब bill बनता है तब नहीं, जब physically goods बाहर जाते हैं तब. And return inward मतलब sales return when the goods are received back. When the goods are received back. But purchases are entered in the purchase book when the invoices are received. So accounting policy of the businessman is very different. Sales are recorded when goods are physically going out and sales return are recorded when goods are physically received back. But purchases are recorded when we prepare the bill. गुड्स आया गया उससे मतलब नहीं है. लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, फिजिकल स्टॉक दिया, ये लोग फिजिकल स्टॉक ही ढूंढ के दे रहे आईसीआई वाले. नॉर्मली फिजिकल स्टॉक से बुक स्टॉक ही ढूंढना होता है. ओके. Sales between 1st April to 9th April amounted to 60,000 as per the sales book. Now this is stock taking done after the year ending. So all sales will be added at cost price. Added at cost price. Added at cost price. So cost price निकाल देते हैं. यहाँ पे loading element दिया. GP is 25% on cost. So I always prepare this. CP plus P is equal to SP. CP means cost price. P means profit. SP means selling price. 25 on cost. After percentage whatever word comes. After percentage whatever word comes, that will be 100. If it is cost, then cost 100. If it is sales, then sales 100. So 100 plus 25, 125. How much sales? 60,000. So this is the selling price. We need to find out the cost price. This comes to 60,000 into 100 divided by 125, 48,000. So sales should be added back at cost price. Here it is 48,000. This was the starting point. Next point. Point number 3. Free samples for business promotion issued from during 1st April to 9th April. Means for promoting the business, we issued free samples amounting to 4,000 at cost. Again, these goods were there with me on 31st March. ये बाहर चले गए तो इसको भी ऐड बैक कर देंगे क्योंकि ये सेल जैसा हो गया. मैंने सैंपल्स क्यों बढ़े कि मेरा सेल बढ़े. तो सेल्स ऐड बैक एट कॉस्ट प्राइस, पर ये कॉस्ट पे ही है तो इसको ऐड बैक किया होगा 4,000. यहाँ पे
आगे बढ़ते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, फिजिकल स्टॉक दिया, नॉर्मली वी आर सपोज टू फाइंड आउट बुक स्टॉक, बट हियर इंस्टीट्यूट हैज इंटरप्रेटेड दैट फिजिकल स्टॉक हैज बीन गिवन एंड फाइंड आउट फिजिकल स्टॉक ओनली ऑन 31st मार्च। सो कहाँ चेंज होने वाला है देख लेते हैं। आई होप ये दोनों ट्रांजेक्शन क्लियर है। जो पहला ट्रांजेक्शन था पॉइंट नंबर 2 वाला, पॉइंट नंबर 2 वाला, हियर गुड्स वर सोल्ड, सो sales should be added back at cost price because these goods were physically lying with me on 31st मार्च, क्योंकि फिजिकल से फिजिकल जा रहे हैं। सेम 4000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री सैंपल्स के लिए, क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए? फॉर सेल्स प्रमोशन। अगेन फिजिकली दिस गुड्स वर लाइंग विथ मी ऑन 31st मार्च, इसके लिए इसको भी ऐड बैक कर दिया। नाउ परचेज इज ड्यूरिंग 1st अप्रैल टू 9th अप्रैल अमाउंटेड टू 10,000। अब इन 9 दिनों में 10,000 के गुड्स परचेज किए। नॉर्मली परचेज क्या करते हैं? लेस करते हैं, क्योंकि ये गुड्स काउंटिंग में आ गए थे 9 अप्रैल को, पर ये गुड्स मेरे पास थे क्या 31st मार्च को? नहीं। बट गुड्स अमाउंटिंग टू 2000 नॉट रिसीव टिल द स्टॉक टेकिंग वाज डन। अगेन रिपीट करता हूँ, फिजिकल स्टॉक दिया, बुक स्टॉक ढूंढना होता है नॉर्मली, पर यहाँ पे फिजिकल स्टॉक दिया, फिजिकल स्टॉक ही इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है। सो हाउ मच गुड्स भी परचेज? 10,000। सो अगर ये नॉर्मल सम होता तो मैं कितना परचेज माइनस करता? 10,000, क्योंकि परचेज कैसे बुक कर रहे हैं? एज पर द इनवॉइसेस। बट यहाँ पे फिजिकल से फिजिकल जा रहे हैं, तो मुझे एक्चुअली कितने गुड्स मिले हैं? खाली 8,000, क्योंकि 2,000 नहीं मिले, तो 8,000 माइनस होना चाहिए। ये देखो, ये रहा। I hope this is clear. And one more point is that फिजिकल से फिजिकल जा रहे, इसके लिए 8 माइनस किए। अगर फिजिकल से बुक स्टॉक जाते होते तो आई वुड हैव डिडक्टेड 10,000। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर गाइस, invoices for goods purchased amounting to 55,000. Again we purchase goods and the bill is prepared. When it is prepared and entered on 28 March, means before the year ending. So we have purchased goods, we have prepared the bill before the year ending, but the goods were not included in stock. मतलब मैंने परचेज किया 28 मार्च को, बिल भी बनाया 28 मार्च को, बट गुड्स मैंने स्टॉक में गिने ही नहीं है। सो नाउ फिजिकल से फिजिकल जा रहे हैं, फिजिकल से फिजिकल जा रहे हैं, तो ये गुड्स मेरे स्टॉक में ऐड होने चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैंने काउंटिंग में लिया ही नहीं था। लेट्स चेक, हियर ऐड एंड वी गेट द फाइनल स्टॉक, दैट इज वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, हियर इट इज। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, नॉर्मल सम होता तो क्या करते? नॉर्मल सम होता फिजिकल स्टॉक से बुक स्टॉक, सो दिस purchases would have been ignored because these were entered before the year ending. I hope guys it is very clear. Two questions which we discussed. One was bank reconciliation statement and the other was valuation of inventory. Thank you.